today we have got an incredible opportunity that we are here celebrating 10th International Yoga Day in our country, and we are really grateful that we all have gathered this gathering with our DC sir and virtually with our Honorable PM Shri Narendra Modi ji. भाई ध्यान रखो जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनो. अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? ये ध्यान जो है ना, वो हमारे कंसंट्रेशन, हमारा कितना फोकस है चीजों पर, हमारा मन कितना केंद्रित है, उससे जुड़ा विषय है. अगर हम अभी देखते हैं हमारी सोसाइटी में हर एक घर में एक मरीज होता है ब्लड प्रेशर का, और उस ब्लड प्रेशर से लड़ने के लिए हम योगा ट्राई कर सकते हैं. तो ज्यादातर लोगों के मन में ऐसा रहता है कि ये कोई बड़ी स्पिरिचुअल जर्नी है. The 10th International Yoga Day was celebrated with fervour and enthusiasm at Hockey Stadium Pulwama on Friday, June 21st, 2024. The grand event saw significant participation from local officials, students, and community members, underscoring the growing interest in yoga for physical and mental well-being. Prominent attendees included Deputy Commissioner Pulwama Dr. Basharat Kiyam, Senior Superintendent of Police Pulwama, PD Nitya, Additional Deputy Commissioner Pulwama, Zafar Hussain Shaw, District Ayush Officer, and the District Sports Officer. Students from various schools across the district also participated, creating a vibrant and energetic atmosphere. मेरा नाम है सईद सबाज शबीर और मैं हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल पुलवामा से. And today we have got an incredible opportunity that we are here celebrating 10th International Yoga Day in our country, and we are really grateful that we all have gathered this gathering with our DC sir and virtually with our Honorable PM Shri Narendra Modi ji. So basically क्या होता है, लोगों को लगता है ये एक religious practice है, but it's not a religious practice. ये बहुत ज़्यादा secular exercise है जो हमें एक स्ट्रेसफुल लाइफ से दूर रखती है. My name is Anik Parvez. I am from Dolphin International School Pulwama. तो योगा एक इंडियन फिलॉसफी है जो सालों से चलती आ रही है, और आज जो मोदी जी ने ये योगा डे रखा है, इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. योगा हमारी सेहत के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, उससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं. जैसे कि अगर हम अभी देखते हैं हमारी सोसाइटी में हर एक घर में एक मरीज होता है ब्लड प्रेशर का, और उस ब्लड प्रेशर से लड़ने के लिए हम योगा ट्राई कर सकते हैं. अगर हम सुबह उठ के 15 मिनट योगा करते हैं तो उससे हम जो हमारी प्रॉब्लम्स है वो खत्म होती है. Under the guidance of experienced yoga instructors, participants engaged in a series of yoga asanas, breathing exercises, and meditation techniques. The collective effort demonstrated the community's commitment to adopting healthier lifestyles and highlighted the significance of yoga in fostering overall well-being. मैं डॉक्टर मुश्ताक, डिस्ट्रिक्ट आयुष ऑफिसर पुलवामा. आज जो यहाँ पर 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर तबके के लोग और हर उम्र के लोग यहाँ पर इस इज्तिमा में मौजूद हैं, और यहाँ पर डीसी साहब इसकी क़यादत करेंगे. योगा प्रेमी यहाँ पर प्रेजेंट है, और सब सेंसिटाइज किया जाता है, अवेयर किया जाता है. वो डेली बेसिस पर ये एक्सरसाइज करें और कोशिश करें अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपनी फैमिली को हेल्दी रखने के लिए, अपनी सोसाइटी को हेल्दी रखने के लिए. Deputy Commissioner Pulwama Dr. Basharat Kiyam addressed the gathering, emphasizing the importance of integrating yoga into daily routines to combat the challenges of modern sedentary lifestyles. Yoga is not just a form of exercise, but a way of life that promotes physical, mental, and emotional health, he said. Dr. Kiyam also noted the special connection of the event with the Honourable Prime Minister Narendra Modi, who virtually joined all districts for the celebration. Despite the rain, the organisers ensured a smooth and enjoyable event. तो
हमारा इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये बहुत ही स्पेशल था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सभी डिस्ट्रिक्ट्स में वर्चुअली जुड़े हुए थे। और सुबह सुबह जैसे मौसम ने थोड़ी करवट ली, 5 सवा 5 के आसपास काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद जब थोड़ा सा बारिश रुक गई और यहाँ उन चुनौतियों को देखते हुए भी पूरा जितनी हमारी टीम्स थी उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किए। Dr. Kiyam expressed his gratitude to the Ayush Department, Youth Services and Sports, and the Education Department for their efforts in promoting yoga among the youth and integrating it into their daily routines. He highlighted that the Ayush Department regularly holds yoga sessions at their centres, encouraging people to incorporate yoga into their lives for better health and wellness. और उसमें उसके साथ साथ जितने पार्टिसिपेंट्स थे आप देखा पूरी हजूम उमड़ आई थी इसमें पूरे मैदान में। तो उसके लिए मैं हमारा जो आयुष डिपार्टमेंट है और उसके साथ साथ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, एजुकेशन डिपार्टमेंट, अदर रिलेटेड डिपार्टमेंट्स, एक तो आज के पार्टिसिपेशन के लिए उनको अप्रिशिएट करता हूँ। Given that our lifestyle has become increasingly sedentary, it is essential to include yoga in our daily activities.